ऑस्मोसिस। हम लोग ऑस्मोसिस एक ऐसा टर्म है जो बायोलॉजी में हो या केमिस्ट्री में हो, दोनों जगह हम लोगों ने काफ़ी इस बारे में सुना है। तो देखो बेटा, ऑस्मोसिस क्या होता है। वी हैव हर्ड ऑफ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक ऐसा मेम्ब्रेन जिसमें माइन्यूट होल्स होते हैं, कंप्लीटली परमिएबल नहीं। कंप्लीटली परमिएबल इज दैट मेम्ब्रेन which allows everything to pass through it because the size of the pores in the membrane are very big as compared to the material that needs to be passed on through it. So we need a semi-permeable membrane through which we can assume or we can understand कि solvent यानी कि जो liquid है वो liquid सीप इन करता है, और जो सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे या जो बड़े पार्टिकल्स होंगे, बिगर पार्टिकल्स, दे आर अनेबल टू पास थ्रू। हम लोगों ने घर पे इसको नॉर्मल यूज में जो सुना होगा, व्हाट हैपेंस कि जब भी हमें मतलब घर के पॉइंट ऑफ व्यू से पनीर बनाना हो, सो व्हाट इज द स्टेप एज पर इंडियन किचन्स, व्हाट वी डू इज वी यूज citric acid to disassociate milk। जब सिट्रिक एसिड से हम मिल्क को डिसोसिएट करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास सॉलिड यूनिफॉर्म पार्टिकल ऑफ पनीर नहीं फॉर्म होता। द इंटरमीडिएट पार्टिकल्स आर टिपिकली वेरी ग्रैन्युलर इन नेचर। सो उस ग्रैन्युलर नेचर पार्टिकल्स को रात भर हमें मुस्लिन क्लॉथ में, म्यूस्लिन क्लॉथ में बांध के रखते हैं, as a result of which excess water get drained out, but the solid particles which were earlier uneven turn out to be even because they are kept under pressure, kept under pressure. So this pressure under which they are kept while formation of paneer is termed as the osmotic pressure, जिसका मतलब ये होता है कि कोई भी अनइवन पार्टिकल हमारे उस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं पास करता, जिसकी वजह से ऊपर भी जो पार्टिकल्स रह जाते हैं या जिस सॉल्यूट की हम बात कर रहे हैं वो सॉल्यूट हमारा इवनली टोन दिखने लगता है और बन जाता है। लेकिन अगर हम इसको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो ये इस तरीके से चलता है। इसमें ग्लास वायर में वाटर है, वाटर में हमने इसको अंदर से प्रेशर एग्जर्ट होता है, ये जो प्रेशर होता है ये जो कैलकुलेशन होती है HdG, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। व्हाई? बिकॉज ऊपर से नीचे की ओर हर पार्टिकल या हर सब्सटेंस या हर मेटल या हर नॉन मेटल में कुछ पॉइंट तक प्रेशर लगता है। सो दिस प्रेशर फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज ड्यू टू एक्सेलरेशन due to gravity. This acceleration due to gravity is g. Density h is your height. हाइट का यहाँ पे स्पेशल इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस इसीलिए है क्योंकि the greater the height of the liquid in the vessel, the greater the height in the vessel, the greater the pressure due to the acceleration due to gravity and the density of the solvent and the solute individually. Acceleration due to gravity हम फिजिक्स से इस बात को जानते हैं कि अगर हमारे पास वर्टिकल हाइट ज़्यादा है किसी भी मटेरियल जिस पर हम प्रेशर एक्सर्ट करना चाह रहे हैं, तो उस मटेरियल जिस पर हमारे पास जिसकी हाइट या जिसके कॉलम की हाइट बड़ी है उस पर प्रेशर ज़्यादा लगता है, और अपर लेयर पे प्रेशर कम होता है, प्रेशर ट्रांसफर होते होते लोअर लेयर यानी कि बेस ऑफ द वेसल तक पहुंचता है। सेम प्रिंसिपल हम एटमॉस्फेयर की जब बात करेंगे इधर फिजिक्स में या जियोग्राफी में, तो एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर है हमारे पास a column of air standing from the earth to the outer layer of the earth near perigee। तो ऊपर जब हम पहुंचते हैं पेरिग्री तक पहुंचने की जरूरत नहीं है हमें, हम जब प्लेन लेवल यानी कि लेट्स से फॉर एग्जांपल दिल्ली,
दिल्ली में हमारे पास एयर लेवल बहुत, एयर एनवेलप बहुत स्ट्रांग है, तो वहां पे हमें कंफर्टेबल फील होता है। लेकिन जैसे हम ऊपर जाते हैं किसी भी हिल स्टेशन पे, लेट्स से दार्जिलिंग, द क्वीन ऑफ हिल्स, विच इज 1475 मीटर अप्रोक्सीमेटली, उससे ऊपर नाथुला, जो इंडिया चाइना का पास है, in northeast India, that is at 1900 plus height. So when we reach here at Nathula Pass, there is a 0 point या 0 point व्यू वे कहा जाता है उसे, वहां का जो हाइट है 2100 मीटर से भी ऊपर है फ्रॉम सी लेवल। इस हाइट पे सांस लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन बहुत कम हो जाता है, बिकॉज जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जो एयर की कॉलम हाइट है वो छोटी होती जाती है। कहा जाता है कि हमारे अर्थ से लेके ऊपर 323 किलोमीटर का वर्टिकल हाइट है। तो 323 किलोमीटर हो गया बच्चों मेरा 323 किलोमीटर, विच इज इक्वल टू 32,300 मीटर्स। उसमें से जाहिर सी बात है कि 1900 मीटर पे अगर हम पहुंचेंगे तो कम होने लगेगा उसके ऊपर का डिफरेंस। ओके, नाउ ऑस्मोसिस हो गया हमारा। ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ हमारे को केमिस्ट्री या बायोलॉजी या सिर्फ फिजिक्स में ये नहीं है, सेग्रीगेटेडली काम नहीं आता, ये हमें हर जगह पे काम आता है, हर सब साइंस पे काम आता है, बट chemistry में it's good to know information के लिए। Now osmotic pressure, osmotic pressure is equals to the hydrostatic pressure exerted by 1 mole of the solution at 1 meter height of a solvent column. This is what is known as the osmotic pressure. Now that is a good to know information till there that what is known as the, what does the osmotic pressure mean. However, it is also good to know that any reaction or any type of a reaction converting into product due to osmotic pressure is a redox reaction, and if the equilibrium stage is reached, then this reverse osmosis also takes place. सिंपल स्टेटमेंट है। एक बार इस रिएक्शन का जो ऑस्मोटिक मतलब ये इक्विलिब्रियम रीच हो जाता है, तो ड्यू टू अ रिडॉक्स रिएक्शन रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस। यहां पे क्या होता है, हाइपो नॉर्मल सॉरी हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक पे जाता है। हाइपोटोनिक हो गया मेरा जिसका सोल्यूट डेंसिटी कम हो, लोअर सोल्यूट डेंसिटी। हाइपरटोनिक स्ट्रॉन्गर सोल्यूशन, which means higher solute density. ओके, नॉर्मली जो ऑस्मोसिस होता है वो होता है हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक पे, बट रिवर्स ऑस्मोसिस होता है हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक पे। इस चीज को सर्टिफाई किया था हमारे एक बॉटनिस्ट ने जिनका नाम था वेंटॉफ। वेंटॉफ ने एक वेसल में ये अल्कोहल भर के रखा था और उसको एक एनिमल मेम्ब्रेन जो फॉस्फोलिपिड से बना हुआ था। एनिमल स्किन इज मेड अप ऑफ phospholipids. Phospholipids mean is a combination of phosphorus plus fat. However, this fat is glycerol plus ethanol. This which I am talking about is strictly about animal fat, which is used for membranous purposes, which are animals like cows, pigs, buffaloes.
these animals are slaughtered, or whatever word you would want to use for them, these animals are slaughtered and are used, the products are used for the preparation of semi-permeable membrane. How, and if we talk about botanical vegetables which are used, the most common vegetable or the most common material used is onion. Okay, this was about osmotic pressure. Now the last topic for the day today would be electrochemistry. We will be starting into electrochemistry today and would continue further electrochemistry on tomorrow onwards. Okay. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चों जैसे नाम तो क्या सजेस्ट करते हैं दिस इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with conversion of of chemical to electrical energy, chemical to electrical energy due to flow of current. Now, one thing that needs to be kept in mind is flow of current through electrolyte is electrolytic conduction. Flow of current through ionic conduction, be it cation or anion. Cation or be conduction is called electronic conduction. Okay. ये हम लोगों को समझ में आ गया, राइट? अब हम ये देखेंगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो एक सेट ऑफ रिएक्शंस पे चलती है, विच रिएक्शन द टर्म ERS, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन सिस्टम. ये रिडॉक्स हैं एंड रिवर्स भी हैं एंड फास्ट भी हैं, which means Fe3 plus Cu minus gives me Fe2 plus Cu2 plus. So this electrochemical reactions या ERS जो हैं वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि जो मेरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं how early or how fast they can lose the electron and how fast can a reducing agent gain an electron. Okay, so this is the overview about electrochemistry. इस चीज पे, इस electrochemistry के इस पॉइंट पे एक बात याद रखेंगे हम आज के लिए कि energies cannot be created nor destroyed. Same thing, same rules another stands for my electrons. So we'll have to see, and the conduction of electrons through the solution or through the electrolyte is only effective when the electrolyte is a good conductor of electricity. Okay, one last point here. The electricity conduction depends on type
of metal used for plates also it travels from anion to cation. ओके, इसके बाद का जो भी सब टॉपिक हमारे पास बचते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो हम कल यूज करेंगे. तब तक स्टे सेफ.